Assalamu alaikum and welcome students. Today we are going to start our new chapter of physics. Chapter 2, Measurement. Definition. It is the comparison of an unknown quantity with the standard to see how many times it is big or small as compared to the standard. For example, 5 kg of wheat flour. It is commonly observed that when we ask a shopkeeper for 5 kg of wheat flour, he put 5 kg's weight on one pan of the balance and slowly add wheat flour in the other pan of the balance. And doing so, he actually compares the standard 5 kg's weight with the quantity of wheat flour until both pan balances each other. स्टूडेंट्स, जब हम शॉपकीपर के पास जाएं और कहें कि हमें 5 केजीज व्हीट फ्लावर या मैदा चाहिए, गंदम का आटा चाहिए, तो उस सूरत में वो बैलेंस की एक तरफ 5 केजी का वजन रखता है और दूसरी तरफ वो आहिस्ता आहिस्ता व्हीट फ्लावर ऐड करना स्टार्ट कर देता है, गंदम का आटा डालना स्टार्ट कर देता है और वो डालता जाता है अनटिल और अनलेस दोनों ही पैन्स एक दूसरे के बराबर ना आ जाएं. आपने अक्सर ऑब्जर्व किया हुआ होगा, जैसे जैसे वो आटा डाल रहा होगा तो वो पहले ऊपर नीचे होगा. जैसे ही व्हीट फ्लावर वाला पैन नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करता है, वो फौरन से रुक जाता है शॉपकीपर और उसमें से फिर वापस निकालना स्टार्ट कर देता है अनटिल और अनलेस जिस एक पैन के अंदर जो है 5 kg का वेट रखा हुआ है, दूसरे में जो है व्हीट फ्लावर रखा, जब तक वो एक दूसरे को बैलेंस ना कर लें. सो एक्चुअली हुआ क्या, शॉपकीपर ने 5 kg का वेट जो कि एक बार पैन में रखा था, तो उसने उस 5 kg के वेट को व्हीट फ्लावर के साथ कंपेयर किया. सो इट इज अ कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी. अननोन क्वांटिटी किस चीज की? व्हीट फ्लावर की. स्टैंडर्ड क्या था? वो 5 kg का बार जो उसने रखा. ठीक है, ये देखने के लिए कि जो क्वांटिटी वो मेजर कर रहा है वो क्वांटिटी कितनी है, वो ज्यादा या कम तो नहीं है. एग्जैक्ट जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी ही क्वांटिटी मिल सके. ओके. Measurements in daily life. Students, we use different measuring devices and apparatus for the measurement. For example, a fruit seller use a device for measurement of mass or the weight of the fruits, and for length we use inch tape or simple the scale meter, and for measurement of the temperature we use thermometer. The selection of the device and apparatus is depend upon how much accuracy we want, because accuracy for the measurement depend upon the quality of instrument used. For example, during performing of a practical, we use measuring cylinders, we use digital devices, and we use the stopwatches. So basically in lab we use more accurate devices than we use in a daily life. Okay. Next is why measurement is important. Measurement important क्यों है? It is important because careful and precise work of measurement leads to the discovery of very important laws. अगर बहुत एहतियात के साथ और एक्यूरेट हमने मेजरमेंट किया है तो एक्यूरेट मेजरमेंट जो है वो हमें साइंटिफिक अप्रोच में इन द एंड इम्पॉर्टेंट लॉज भी प्रोवाइड कर सकती है. Collection of data is necessary during experimentation because after doing the hypothesis for the experimentation, we use many measuring devices, and these measuring devices provide us different forms of data, and according to these data, the hypothesis can be a scientific law. It allows us to make decision more conveniently. मेजरमेंट इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसकी ही वजह से हमें अपने बहुत सारे फैसले करने में आसानी रहती है.
Quantities. All objects have properties whose measurement are known as quantities. For example, mass, length, time, area, wickedness, selfishness, honesty, etc. These all are the examples of quantities or the properties every object possesses. Students, among all these quantities, we can observe that only some quantities can be measurable and some quantities can't be measured. Those quantities which can be measured are called physical quantities. Physical quantity. A physical property that can be measured and described by a number is called physical quantity. For example, mass of a person is 65 kgs. Length of a table is 3 meters. Area of a hall is 100 meters square. Temperature of a room is 300 Kelvin. Physical quantities comprise a number and a name for the unit. For example, 10 kilogram of flour. In this example, 10 is the number, while kilogram is the name for the unit of mass. Physical quantities are divided into two groups. Number one, fundamental quantities. Those quantities whose units are defined by the standard are called fundamental or basic quantities. वो तमाम quantities जो कि एक standard के through defined की गई हो, ऐसी quantities को basic quantities या fundamental quantities कहा जाता है. बेसिक क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उन यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है. फॉर एग्जांपल, सेकंड, केल्विन, meter, kilogram, etc. The unit second is used for time. The unit Kelvin is used for temperature. The unit meter is used for length. And the unit kilogram is used for the mass. Derived unit quantities. Those quantities whose units obtained by multiplication or dividing the units of fundamental quantities are called derived quantities. वो तमाम की तमाम quantities जो कि fundamental quantities को ही multiply करके या divide करके बनाई जाएं, ऐसी तमाम quantities को derived quantities कहा जाता है. अब वो तमाम यूनिट्स जो derived quantities के लिए इस्तेमाल किए जाएं वो derived units कहलाते हैं. जिस तरह derived quantities के को एक्सप्लेन करने के लिए हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, इसी तरह से derived क्वांटिटीज के यूनिट्स को एक्सप्लेन करने के लिए भी हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के ही यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल, मीटर पर सेकंड, meter cube, meter square, etc. Now, see the first example, meter per second. Meter is the fundamental quantity of length. Second is the fundamental quantity time. And meter per second means in meter per second it is basically the unit of speed. In meter per second it means we are talking about length and as well as the time. So there are two quantities and both are the fundamental, but both are used to explain another quantity of speed. That's why it is termed as derived quantity. Next is meter cube. Meter is the unit of length. मीटर क्यूब मीन्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है हमने मीटर को. इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही है. अगेन फंडामेंटल क्वांटिटी थी मीटर लेंथ की, हमने उसी को मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स, तो आपके पास ड्राइव्ड क्वांटिटी आ गई. मीटर स्क्वायर अगेन आपके पास लेंथ थी, लेकिन उसको भी जब आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ड्राइव्ड क्वांटिटी बन गई. नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स. A set of fundamental and derived units is known as system of units. Student, system of units ऐसे सिस्टम को कहा जाता है जो कि इंटरनेशनली यूज किए जाएं मेजर.
System of units. Number 1, CGS or metric system. Number 2, British engineering system. Number 3, System International. Number 1, CGS system or metric system. This system was adopted in 1791 in France. CGS stands for C for centimeter, G for grams, S for seconds. CGS system based on three fundamental quantities. C centimeter, number 1 length, number 2 mass, number 3 time. Number 2, British engineering system. This system was adopted in 1824. F stands for foot, P stands for pound, and S stands for second. This system is also based on three fundamental quantities. Number 1 length, number 2 force, number 3 time. Number 3, SI system or System International D units. This system was adopted in 1960s by General Conference on Weight and Measures and decide a system of units for international usage. फ्रेंड्स, आज तक सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सिस्टम SI सिस्टम ही है. This system consists of 7 units. Quantities and their units. Basic quantities, those 7 quantities which are given by SI system. Number 1 length and its unit is meter. Number 2 mass, its unit is kilogram. Number 3 time, its unit is second. And number 4 electric current, its unit is ampere. Number 5 temperature, its unit is Kelvin. Number 6 amount of substance and its unit is mole. And last is luminous intensity and its unit is candela. And that brings us to the end. Thank you for making time to sit through this lecture. Allah Hafiz.